Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we'll be doing this beautiful shell pattern. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा शेल पैटर्न कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे. So let's begin. So we'll begin by making a slip knot first. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And now we have to chain in multiples of 4. So I'll chain accordingly. In the multiples of 4 you can make the foundation chain long or small as what you're making. It depends on that. तो आपको अपने मल्टीपल्स ऑफ 4 के हिसाब से अपनी फाउंडेशन चेन रखनी है, लाइक 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. तो उस हिसाब से आपने अपनी फाउंडेशन चेन रखनी है कि वो जो आपकी फाउंडेशन चेन का नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा. 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 के टेबल में जो नंबर आता है उस हिसाब से. ठीक है. सो विल मेक आवर फाउंडेशन चेन इन मल्टीपल ऑफ 4 एंड आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. So I have made 36 chains which is a multiple of 4. मैंने 36 chains बना ली हैं जो multiple of 4 है. And now we can start with our pattern. अब हम अपना pattern start करेंगे. So skip the first 3 chains here and go into the 4th chain. तो हम 4th chain में जाएंगे. And in the 4th chain we have to make a shell. अब shell क्या है? 2 double crochet stitches, chain 1, 2 double crochet stitches एक ही stitch में. In one stitch we have to make 2 double crochet stitches, chain 1, 2 double crochet stitches in one chain, and that will be our shell. So we'll make our shell in the 4th chain from the hook. Make a double crochet stitch, make another double crochet stitch in the same chain, then chain 1, make 2 more in the same chain. तो हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 1 और 2 डबल क्रोशे स्टिचेस एक ही चेन में बनाई हैं और ये हमारा शेल है. सो वी हैव मेड आवर शेल. नाउ स्किप 3 चेन्स, गो इन टू द 4th वन एंड मेक अनदर शेल. तो 3 चेन्स को हम स्किप करेंगे, 4th वाले में जाएंगे और एक और शेल बनाएंगे. विल मेक अनदर शेल. सो 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 1 and 2 more double crochet stitches in the same chain. Then again skip 3 stitches, 3 chains and go into the 4th one and make a shell. तो 3 chains को हमने skip करते जाना है और हर 4th chain में हमने एक shell बनाना है. तो इस row के लिए यही pattern है. So this is the pattern for this row. We have to keep on continuing this until we reach the last 4 chains. Again skip 3 chains, go into the 4th one, make a shell, and you have to repeat this for your row 1. I'll complete this row and then I'll show you what to do at the end. So just keep repeating this. So I've almost completed the row 1. मैंने row 1 almost complete कर दिए. Last 4 chains are left and what you have to do, you have to go into the 4th chain which is the last chain and make a shell. If by any chance you have 3 chains left or you have let's say 5 chains left, don't worry, don't panic, just go into the last chain whichever is the last chain and make a shell. तो कहीं आपके पास अगर आपका फाउंडेशन चेन का नंबर आप गलत काउंट कर लेते हो या कोई मिस्टेक हो जाती है और लास्ट में आपके पास 3 चेन्स बची हैं या 5 चेन्स बची हैं, पैनिक नहीं करेंगे और आप बस लास्ट वाली चेन में जाके शेल बना देंगे. तो पैटर्न आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दिस इज़ रो 1. लेट्स स्टार्ट विद आवर रो 2. रो 2 स्टार्ट करेंगे. चेन 3, 1, 2, 3, टर्न योर वर्क, अपना वर्क टर्न करेंगे and skip the stitch over here, the double crochet stitch, go into the second one and make a front post double crochet stitch. तो ये जो second वाले double crochet stitch है इसमें हम एक front post double crochet stitch करेंगे. Then we'll make a V stitch in the chain 1 space. ये जो chain 1 space है इसमें हम एक V stitch बनाएंगे. V stitch के लिए हमने क्या करना है? For the V stitch we have to make a double crochet stitch. एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, चेन 1 एंड 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. तो डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1, डबल क्रोशे स्टिच, ये हमारा वी स्टिच हो गया.
जो कि हमने चेन 1 स्पेस में बनाया है. और देन अगेन द नेक्स्ट डबल क्रोशा स्टिच वी हैव टू मेक अ फ्रंट पोस्ट. तो इस डबल क्रोशा स्टिच से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे ऐसे. देन अगेन we'll skip the double crochet stitch of the next shell and go into the second double crochet stitch and make a front post. फिर से हम ऐसे ही करेंगे. जो सेकेंड डबल क्रोशा स्टिच होगा उसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे. V stitch in the chain 1 space, double crochet stitch, chain 1 and a double crochet stitch in the same chain 1 space. So this is our V stitch, and the double crochet stitch here will make a front post. I'm so sorry about the noise because some construction is going on. I know it's really annoying, but you cannot avoid that. Then again we'll repeat this for this row 2. Skip the first double crochet stitch, make a front post with the next one, then a V stitch in the chain 1 space, and a front post double crochet stitch. तो इसी तरीके से हम ये वाला रो कंप्लीट करेंगे. आई विल शो यू हाउ इट लुक्स एट द एंड. आई हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ रो 2. मैं रो 2 के एंड पे पहुंच गई हूँ. लास्ट शेल बचा है. सो लास्ट शेल इज लेफ्ट ओवर हियर. सो आई विल स्किप द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच, गो इनटू द सेकंड वन एंड मेक अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच. सेकंड वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. वील मेक अ वी स्टिच इन द चेन 1 स्पेस. यहाँ पे चेन 1 स्पेस में हम एक वी स्टिच बनाएंगे जो कि है डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1 एंड अ डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस, एंड देन अ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट डबल क्रोशे स्टिच, एंड यू आर डन विद द रो 2. रो 2 हमारा हो गया है कंप्लीट. ये जो साइड है ये बैक साइड है. दिस इज द बैक साइड and this is the front side of the pattern. So this is how it looks at the front side. So now let's begin with our row 3 and row 3 and row 4. That is your repetition of the pattern. You have to keep repeating row 3 and row 4 until you get your desired length. So for row 3, chain 2 एंड टर्न योर वर्क. चेन 2 करके अपना वर्क टर्न करेंगे. और यही रो 3 और इसके बाद वाली जो रो है रो 4, इसी को आपने रिपीट करते जाना है जब तक आप अपने डिज़ायर्ड लेंथ पे नहीं पहुंचते. सो नाउ यू कैन सी दीज चेन 1 स्पेसेस in between the shells. You have to make shells in between these chain 1 spaces. तो जो ये chain 1 spaces हैं इनके बीच में हमने shells बनाना है. यही हमारा row 3 है. So we have to just keep making shells in between these chain 1 spaces, and this is our row 3 pattern. So for the shell we have to make 2 double crochet stitches, chain 1 and 2 double crochet stitches in the same space. Then this is the next shell. We'll go and make a shell in the chain 1 space of the shell of the previous row. And be very careful while doing this, because sometimes what happens, we go in between these spaces, which is between the 2 shells. We don't have to go here, we have to go in between the shell, the chain 1 space here, not here. तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 स्पेसेस हैं. एक जो कि ये चेन 1 स्पेस है शेल के बीच में, और एक जो स्पेस है 2 शेल्स के बीच की स्पेस है. हमने वो शेल्स के बीच की स्पेस में नहीं जाना है, हमने शेल के अंदर जो चेन 1 स्पेस है उसमें हमने शेल्स बनाने हैं. तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने ये पैटर्न स्टार्टिंग में जब मैं करने की कोशिश करी थी तो 1-2 बार मुझसे ये मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना. सो जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग अ शेल इन द शेल, एंड दिस इज़ ऑल वी हैव टू डू फॉर आवर रो 3. बहुत ही इजी पैटर्न है. एक बार आप स्टार्ट करेंगे करना तो बहुत ही जल्दी बनता है. इससे ब्लैंकेट्स और शॉल्स, मफलर्स, स्वेटर्स, बहुत कुछ बन जाएगा. बहुत ही सुंदर है और बहुत जल्दी वर्क होता है. सो आई जस्ट कीप डूइंग दिस शेल इन द शेल एंड देन मीट यू व्हेन आई रीच हियर.
So I have reached the end of row 3. मैं row 3 के end पे आ गई हूँ and one last shell is left over here. So I'll be doing a shell in this shell. इस shell में हम एक shell बनाएंगे. और ये हमारा हो गया complete. And just to give it a neat look, what you can do is you can just make a double crochet stitch on the chain 2 space here. तो क्या होगा, उससे एक neat look आएगा. Now we'll begin with our row 4. Row 4 is just exactly the same as our row 2. तो जो row 4 है वो exactly same है हमारी row 2 के जैसे. So what we have to do is we'll chain 2. We'll turn our work. We'll make a front post double crochet stitch in the second double crochet stitch here. So we'll skip the first one and we'll go into the second one and we'll make a front post double crochet stitch. Second वाले double crochet stitch में हम एक front post double crochet stitch बनाएंगे. Then a V stitch in the chain 1 space. Chain 1 space में हम V stitch बनाएंगे. And a double crochet stitch in the next double crochet stitch. Front post double crochet stitch in the next double crochet stitch. Then again we'll go into the next shell. We'll skip the first double crochet stitch of the shell and we'll go into the second one and make a front post. First वाले double crochet stitch को हम skip करके second वाले में front post double crochet stitch बनाएंगे. Then we'll make a V stitch in the chain 1 space. यहाँ पे हम एक V stitch बनाएंगे chain 1 space में. And then a front post double crochet stitch in the next double crochet stitch. तो यहाँ पे हम एक front post double crochet stitch बनाएंगे. And this is the way you have to keep repeating until you reach the end. I'll complete it and then I'll show you how it looks. So I have almost completed row 4. Row 4 मैंने almost complete कर दी है, which is a repeat pattern of row 2. जो row 2 के जैसे ही है same. Last shell बचा है मेरा. So the last shell is left. I'll be doing a double front post double crochet stitch in the second double crochet stitch here. Second वाले में front post double crochet stitch करेंगे. V stitch in the chain 1 space. Chain 1 space में V stitch करेंगे. Front post double crochet stitch in the next double crochet stitch. And a double crochet stitch in the chain 2 space. This completes our row 4, and as I told you, this is the back side of the work and this is the front side of the pattern. This is how it looks, and you have to keep repeating row 3, row 4 until you get your desired length. Or you can also repeat row 2, row 3. It's the same, like, because row 2 and row 4 are the same. So you can just keep repeating and you can get your desired length, and this is really pretty. I'll show you how it looks after you make it a little bigger. So this is how the pattern looks when it's done a couple of rows. This is how it looks. ऐसा लगता है ये pattern जो मैंने अभी सिखाया है बहुत ही सुंदर है. Thank you so much for watching. Keep crocheting. Be happy. Stay safe. Bye bye.